Just turn the sound system off. It's such a disturbance. Just turn it off. Thank you. Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavala Girivardhari Jaya Gopi Janavala Girivardhari Jaya Gopi Janavala Yashodanandana Rajajanarantana Yashodanandana Rajajanarantana Yashodanandana Rajajanarantana Yashodanandana Rajajanarantana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Jaya Radha
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai God Premanande! Can we have a little bit of sound system, please? Okay. Jai Om Vishnupad Bharamhamsa Parirajikacharya Astutar Sri Shrimad. His Divine Grace Srila Bhai Charnavinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parirajikacharya Astutar Shri Shrimad. His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Thakur Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai. Prem Sukaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktarinda Ki Jai. Shri Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Shri Gauri Parwa Ki Jai. Shri Gaurnitai Ki Jai. Shri Radha Govinda Dev Ki Jai. Shri Chota Radha Govinda Dev Ki Jai.
Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories, all glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru, Shri Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. हरे कृष्णा। तो हम सभी का परम भाग्य है, सौभाग्य है कि आज गुड़ी पाड़वा के इस बहुत शुभ दिन पे तो संग प्राप्त हो रहा है हिज होलिनेस श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज का। तो मैं कुछ उनके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में बताऊंगा। श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज was born in New York City, USA in 1965, the same year that ISKCON founder Acharya Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada came to New York। तो ये वही 1965 ये वही सेम साल है जिस साल शिला प्रभुपाद ये न्यूयॉर्क को गए थे, उसी साल में महाराज श्री ने जन्म लिया। His mother's younger sister regularly heard Srila Prabhupada's kirtan in Tompkinson Square Park in 1966। तो महाराज की जो भ्राता है सिस्टर, तो वो हमेशा प्रभुपाद के जो कीर्तन है वो सुनती थी। He joined the Hare Krishna movement in Ireland early in 1991। महाराज जी ने ये मूवमेंट आयरलैंड में 1991 में ज्वाइन किया। महाराज was a music student at Accordon Cortland Music, started chanting Hare Krishna, and His Holiness Loknath Maharaj initiated Sri Krishna Swami Maharaj later in 1993, giving him the name Eklavya Das। तो महाराज श्री को His Holiness, इनके गुरु महाराज हिज होलिनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी हैं, और उनको 1993 में उन्होंने एकलव्य दास ऐसे नाम दिया। 27 years later in Pandharpur, the order of sannyas was awarded to Shri Krishna Chaitanya Swami। 21 साल बाद 27 years बाद महाराज श्री को संन्यास दीक्षा मिली। As the title says, Shri Krishna Chaitanya Swami, he continues to be inspiring so many spiritual practitioners all around the world। हम सभी जानते हैं महाराज पूरे वर्ल्ड में बहुत अलग अलग देशों में जाते हैं, जैसे उनका नाम है चैतन्य महाप्रभु का नाम वो प्रचार करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज, उनके म्यूजिक के बारे में कुछ चीजें अभी। was born in a family who encouraged education, culture and art। While bouncing on his father's knees, he began to learn piano at the age of 5। At 6 he started guitar lessons। At 7 he began trumpet lessons। By the time he entered Brooklyn College of Music in Boston in 1982, he had already learned 16 different instruments and performed in music groups in venues across USA। महाराज श्री को ऑलमोस्ट 16 अलग अलग प्रकार के वाद्य आते हैं, और बचपन से ही वो एक एक वाद्य सीखते हुए हैं। In 1984 he accompanied by a friend in Boston, he went to the Hare Krishna temple and became a regular visitor। तो बोस्टन में 1984 में महाराज श्री मंदिर में जाने लगे और वैसे वो जुड़ गए। In 1987 Shri Krishna Chaitanya Swami received his degree from Berklee College of Music in Recording Engineering and Production, a unique science combining acoustic engineering, electrical engineering and music। तो महाराज श्री डिग्री होल्डर हैं इंजीनियरिंग की। ये अलग डिग्री है जिसमें अक्यूस्टिक म्यूजिक और कॉम्बिनेशन ऑफ अक्यूस्टिक इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। Upon graduation, he traveled to 25 countries as a professional musician and spiritual seeker। महाराज श्री 25 देशों में अलग अलग म्यूजिक करते हुए और भक्ति ढूंढते हुए गए हैं। From 1991 to 1992, he traveled to pilgrimage on Padyatra through Holland, Belgium, France and Spain। In 1992, during a meeting in Spain with his spiritual master, His Holiness Loknath Swami Maharaj, he was instructed to go to India। Shri Krishna Swami Maharaj traveled with Loknath Maharaj as a secretary for 12 years। So पदयात्रा में महाराज का बहुत सौभाग्य था, जिसमें वो हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन गए, और His Holiness लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने उनको भारत में रहने के लिए कहा। In 1996, Shri Krishna Chaitanya Swami Maharaj was elected as a ISKCON General Body Commission Deputy। तो GBC Deputy Commissioner है महाराज। In 2023, Shri Krishna Chaitanya Swami Maharaj was elected as a GBC Kirtan Minister and GBC Padyatra Minister। So महाराज ISKCON Kirtan Minister हैं और पदयात्रा Minister भी हैं।
In 2006, he was appointed as secretary for the ISKCON Kirtan ministry. His services included coordinating ISKCON's annual International World Holy Name Festival for 25 years. He is one of the founding members of Bhaktivedanta Band and performs at youth festivals worldwide. He is well-known presenter, and as he traveled extensively to USA, Canada, France, England, Germany, Poland, Czech Republic, Switzerland, Italy, Croatia, Switzerland, Belgium, Spain, Belgium, Holland, Guinea, Trinidad, Mauritius, South Africa, Botswana, Russia, India, amongst all these countries, Maharaj ने संकीर्तन करते हुए प्रचार किया है. At the present, he is based in Pandharpur, Maharashtra, in India. अभी महाराज पंढरपुर में रहते हैं, and alongside he's seeing different projects like construction of the new recording studio in ISKCON Pandharpur campus, that is called Lok Studio, to facilitate live stream audio and video production for His Holiness Loknath Swami Maharaj and ISKCON Kirtan Ministry. तो अभी महाराज पंढरपुर के रहवासी हैं और लोक स्टूडियोज करके उन्होंने स्टूडियो खोला है जिसमें अलग अलग रिकॉर्डिंग होता है और लोकनाथ महाराज के जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं आवाज के वो वहाँ होते हैं. तो हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमको आज महाराज का संग मिल रहा है. तो महाराज का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के स्वागत करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. Om Jnana-Trandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Dena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manovishtam Shtapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuddha Parakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Govesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpaturvyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So it is my great honor and pleasure to be here in ISKCON RAVET, Sri Sri Radha Govinda Mandir, here on this most auspicious day of Gaudi Padwa. आज मुझे बहुत आनंद है और सम्मान पात्र प्राप्त हुआ है यहाँ पे राधा गोविंद मंदिर में और आज विशेष तिथि है गुड़ी पाड़वा का. Now my preferences for translation is that you should sit, you can take this chair and sit here next to me so everyone can see your bright, shining, smiling face.
First, some good news for all of you. सबके लिए एक बहुत अच्छा बात भी है यहाँ पे, एक अच्छा समाचार. अच्छा समाचार That many of you may be knowing that the most senior sannyasi in ISKCON, Srila Prabhupada's dear disciple, Param Puja Jayapataka Swami Maharaj, has been in ICU for the past 1 week in Delhi. अब सबको पता ही रहेगा कि जो प्रभुपाद के जो वरिष्ठ शिष्य परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज अभी 1 हफ्ते से आईसीयू में है. Of course, that is not the good news. The good news is that Maharaj was suffering greatly. Very alarming symptoms were being exhibited. Very alarming. महाराज एक बीमार है और उनके बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं. Serious. बहुत गंभीर लक्षण है. Yeah. Every day 2 liters of fluids were being withdrawn from his body. हर दिन उनके शरीर में से कुछ द्रव्य बाहर निकाला जाता है. He was suffering infections. उनको संसर्ग हुआ है, उससे पीड़ित है. Heavy medication. बहुत औषधि प्रक्रिया. He was exhausted. He could not speak. बहुत थके हैं, बोल नहीं पा रहे. And devotees around the world have been praying for him. और पूरी जगत में भक्त उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. So let's pray for him right now by chanting Hare Krishna Mahamantra. हम लोग भी उनके लिए प्रार्थना करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So the good news is that this morning we got a message that his body is no longer producing so many fluids. The infections are under control. He's feeling strong enough to take some food, and he's sitting up and he's asking, when is my next GBC meeting? When I will go on tour, when I will do preaching. तो अच्छा समाचार यही है कि हम भी उनका तबीयत जो अच्छा से हो रहा है, कोई भी शरीर से बाहर द्रव्य नहीं आ रहा है, इन्फेक्शन भी, उनका संसर्ग भी वो भी कम हो रहा है. और बार बार पूछ रहे कि अभी मेरा नेक्स्ट मीटिंग कब है, कभी मुझे नेक्स्ट यात्रा पे जाना है. When I will go for prachar. मैं कब प्रचार के लिए जाऊंगा. And it's really wonderful. His Holiness Shiva Ram Swami Maharaj came all the way from Hungary, from Europe, to meet Jayapataka Swami Maharaj. और परम पूज्य शिवराम स्वामी महाराज पूरा हंगरी से मायापुर में आए महाराज जी से मिलने के लिए. From Hungary, Europe. From Hungary. You have to come closer. You're not hearing what I'm saying. Yeah. And sorry, I'm not speaking that loudly. Then Maharaj, Shiva Maharaj was reading from Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, singing kirtan for Maharaj. और परम पूज्य शिवराम स्वामी महाराज चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत इनसे महाराज जी के लिए पढ़ रहे हैं. And doing kirtan for Maharaj. और कीर्तन भी कर रहे हैं. And Shiva Maharaj is quoted as saying, I have never met anyone so determined to stay on in this world to do the seva for Srila Prabhupada. हरि बोल. तो महाराज जी बोल रहे हैं कि आज तक मैंने पहले ऐसे किसी को नहीं देखा जो इतने दृढ़ है इस भौतिक जगत में रहने के लिए और प्रभुपाद के आंदोलन का प्रचार करने के लिए. परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज की जय. Okay, कृपया और एक बार प्रार्थना जयपताका स्वामी महाराज के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बहुत जोर से बोलिए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Jai Ho. Thank you so much. So Param Puja Jayapataka Swami Maharaj has always been a great inspiration for me. महाराज जी हमेशा लिए बहुत अच्छे से हमेशा के लिए प्रेरणादायी स्थान रहे हैं. With his Navadvip Mandal Parikramas, he would go to the 9 islands of Navadvip with devotees, hundreds, thousands of devotees. हजारों भक्तों के साथ वो नवद्वीप परिक्रमा करते थे. And he would loudly call out. और बहुत जोर से वो बोलते थे, Govinda!
एक मिनट Gauranga! 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 Gauranga, Gauranga! Gauranga, Gauranga! Gauranga, Gauranga! Gauranga, Nityananda! Nityananda, Nityananda! Nityananda, Nityananda! Nityananda, Nityananda! Nityananda, Nityananda! Nityananda, Gauranga! Nityananda! Gauranga! Nityananda, Gauranga! Nityananda, Gauranga! Nityananda, Nityananda! 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 Gauranga, Nityananda! Gauranga, Nityananda! Gauranga, Nityananda! Gauranga, Nityananda! Gauranga, Thank you so much. Hare Krishna. So recently I was in Mayapur in February. अभी फरवरी मंथ में मैं मायापुर में था. We had meetings with the GBC. जीबीसी जो है उनके साथ हमारा Special meeting, SGGS. SGGS. स्पेशल जो है SGGS. Correct. Sannyasis, Gurus, GBCs, Sangha. सन्यासी गुरु जीबीसी संघ. So a very powerful Sangha, all the Gurus and ISKCON, all the GBCs and all the Sannyasis. बहुत प्रभावशाली संघ था जहाँ पे सब सन्यासी जीबीसी साथ में थे. And His Holiness Jayapataka Swami Maharaj was there. और परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज भी वहीं पे थे. And one day he called me over. और एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया. And we were discussing the meeting together. और हम लोग साथ में मीटिंग चर्चा कर रहे थे. I gave him my report, ISKCON Kirtan Ministry report, ISKCON Padayatra Ministry report. मैंने उनको मेरा जो समाचार है रिपोर्ट दिया. You can watch the videos. आप वीडियो भी देख सकते हैं. Giving a plug now. और हम लोग क्लब plug ISKCON Kirtan Ministry. ISKCON Kirtan Ministry. This social media. It's called Instagram. Yeah. Instagram. Shriman Instagram. Instagram. You can see. And then after I discussed with Jayapataka Swami Maharaj, he said, "Give me a hug." और उसके बाद मैं महाराज जी से चर्चा ही कर रहा था तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे आलिंगन दे दो. So I gave him a big hug. तो मैंने उनको बहुत बड़ा आलिंगन दिया. And then he started hugging all the devotees. और सभी भक्तों से आलिंगन करने लगे. And I was really, my heart was really overwhelmed with appreciation for Maharaj. और मेरा जो हृदय पूरा उनका गुणों से भर आया. So we should worship the person Bhagavat and the book Bhagavat. इसीलिए हमको एक व्यक्ति भागवत है और ग्रंथ भागवत उनका पूजा करना चाहिए. So we're so fortunate to have great personalities like Jayapataka Swami Maharaj and other sincere followers of Srila Prabhupada that we can offer our worship to. तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज और बाकी भी प्रभुपाद के शिष्य है और जिनको हम लोग पूजा कर सकते हैं. Prabhupada ki his followers. प्रभुपाद के अनुयायी. अनुगा या अनुयायी. Prabhupada Anugas. प्रभुपाद अनुगा. Yeah, those sincere. ये बहुत प्रामाणिक है. Yeah, sincere followers. प्रभुपाद के प्रामाणिक गंभीर अनुगा. So we offer our obeisances at the dust of the lotus feet of all of Srila Prabhupada's pramanic anugatans, the followers.
तो हम लोग सभी जो प्रभुपाद के अनुयायी है, अनुगत है, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नस्तप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। So reading from Srimad Bhagavatam. But before we start, can I ask devotees just come a little closer to our Age? So many people are coming now. We don't want to make room for them. Yeah. Thank you so much. Jai Ho, Jai Ho. So reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 53, chapters entitled Krishna Kidnaps Rukmini. तो भागवतम से हम पढ़ रहे स्कंद है 10 और अध्याय 53। अध्याय का शीर्षक है कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का अपहरण। Text number 27 और श्लोक क्रमांक है 27। एवं वदव प्रतीक्षान्त्याः एवं वद्वा प्रतीक्षान्त्या एवं वद्वा प्रतीक्षान्त्याः एवं वद्वा प्रतीक्षान्त्या गोविन्द गमनं नृपा गोविन्द गमनं नृपा गोविन्द गमनं नृपा गोविन्द गमनं नृपा वाम उरुभुजो नेत्रा वाम उरुभुजो नेत्रं वाम उरुभुजो नेत्रा वाम उरुभुजो नेत्रम् अस्फुरन् प्रियभाषिणः अस्फुरन् प्रियभाषिणः अस्फुरन् प्रियभाषिणः अस्फुरन् प्रियभाषिणः एवं वद्वा प्रतीक्षन्त्याः एवं वद्वा प्रतीक्षन्त्या गोविन्द गमनं नृपा गोविन्द गमनं नृपा वाम उरुभुजो नेत्रा वाम उरुर्भुजो नेत्रम् अस्फुरन् प्रियभाषिणः अस्फुरन् प्रियभाषिणः एवं वद्वा प्रतीक्षन्त्याः एवं वद्वा प्रतीक्षन्त्या गोविन्द गमनं नृपा गोविन्द गमनं नृपा वाम उरुभुजो नेत्रा वाम उरुर्भुजो नेत्रम् अस्फुरन् प्रियभाषिणः अस्फुरन् प्रियभाषिणः। Please chant. एवं वद्वा प्रतीक्षन्त्या एवं वद्वा प्रतीक्षन्त्या गोविन्दागमनं नृपा गोविन्दागमनं नृपा वाम उरुर्भुजो नेत्रा वाम उरुर्भुजो नेत्रम् स्फुरन् प्रियभाषिणः अस्फुरन् प्रियभाषिणः एवं वद्वा प्रतीक्षन्त्या गोविन्दागमनं नृपा वाम उरुर्भुजो नेत्रम्
सुरसुरं प्रियभाषिणः एवं वद्वा प्रतिक्षन्त्या एवं वद्वा प्रतिशन्त्या गोविन्दागमनं नृपा वाम उरुभुजो नेत्रम् मधुरं प्रियभाषिणः एवं वद्वा प्रतीक्षन्त्या एवं वद्वा प्रतिशन्त्या गोविन्दागमनं नृपा गोविन्दागमनं नृपा वाम उरुर्भुजो नेत्रम् वाम उरुभुजो नेत्रम् अस्फुरन् प्रियभाषिणः अस्फुरं प्रियभाषिणः Vaishnavis. एवं वद्वा प्रतिशन्त्या गोविन्दागमनं नृपा वाम उरुर्भुजो नेत्रम् अस्फुरन् प्रियभाषिणः एवं वद्वा प्रतिशन्त्या गोविन्दागमनं नृपा वाम उरुभुजो नेत्रम् अस्फुरन् प्रियभाषिणः Word for word, you can do sabhi log Hindi समझते हैं आप बोलिए। शब्दों का अर्थ एवं इस प्रकार वधवः वधु प्रतिशन्त्या प्रतीक्षारत गोविंद आगमन कृष्ण का आगमन नृप हे राजा परीक्षित वामः बाई उरु जांघ भुजा बाह नेत्रम तथा आँख अस्फुरन फड़कने लगी प्रिया वांछित भाषण बताती हुई। अनुवाद और तात्पर्यवाद श्रील प्रभुपाद के अनुगत शिष्यों द्वारा। अनुवाद। हे राजा, जब वह दुल्हन गोविंद के आगमन की इस तरह प्रतीक्षा कर रही थी तो उसे लगा कि उसकी बाई जांघ, बाई भुजा तथा बाई आंख फड़क रही है। इसका संकेत था कि कुछ प्रिय घटना घटने वाली है। तो तात्पर्य नहीं है, जो दूसरा श्लोक हम लिख पढ़ेंगे। अथा कृष्ण विनिर्दिष्टा स एव द्विजसात्तमा अन्तःपुराचरन् देवं राजपुत्रं ददार्शः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की प्रिय शिष्य के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृपया आप अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। अनुवाद। तभी वह शुद्धतम विद्वान ब्राह्मण कृष्ण के आदेश अनुसार दिव्य राजकुमारी रुक्मिणी से भेंट करने महल के अंतपुर में आया। तात्पर्य। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार श्री कृष्ण नगर के बाहर बगीचे में आ चुके थे और रुक्मिणी की चिंता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ब्राह्मण को आदेश दिया था कि वह जाकर उनके आगमन का समाचार दे। जय हो। So, shlok again. Atha, this is Atha Krishna Vinirdishta Saeva Dvijasatama Antapuracharim Devim Raja Putram Dadarshaha. So, we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 53, text number 27 and 28. Chapter is entitled Rukmini Haran, Krishna kidnaps Rukmini. तो हम लोग पढ़ रहे अध्याय स्कंद 10 अध्याय 53 और श्लोक 27 और 28 और अध्याय का शीर्षक है कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का अपहरण। So, before I begin to speak, I seek the blessings of all the devotees. Kripaya आप सभी लोग आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। Hare Krishna. So this is a very exciting chapter of Srimad Bhagavatam. बहुत उत्साह देने वाला यह अध्याय है। It's a great classic section of Srimad Bhagavatam, loved by many.
और ये जो अध्याय सबको बहुत प्रिय है, It's very exciting. बहुत उत्साह देने वाला है। Yeah, we all want to see the movie. हम लोग सब सिनेमा देखना चाहते हैं, But at least we can read the Bhagavatam. और यही सब भागवतम में दिया है। And yeah, so this is a very wonderful section. And in the beginning of the section, we hear how there's a beautiful princess named Rukmini, and she's the daughter of King Bhishmaka. भागवतम का बहुत अद्भुत अध्याय है। इसमें हम लोग देखते हैं कि रुक्मिणी के बारे में है, जो राजकुमारी थी और भीष्मक की वो कन्या थी। And her brother is Rukmi. उनके भाई थे रुक्मी। And she really wants to marry Krishna. और रुक्मिणी की बहुत ज्यादा इच्छा थी कि कृष्ण से उनका विवाह हो जाए। But her brother Rukmi promises Rukmini to marry Shishupal. पर उनके जो भाई थे रुक्मी, उन्होंने शिशुपाल से वचन दिया था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ हो जाएगा। Shishupal hates Krishna. और शिशुपाल कृष्ण का द्वेष करते थे। They're like enemies. और शत्रु थे। They're competitors. उनके तुलनीय थे। For the hand of Rukmini. रुक्मिणी के हाथ के लिए। Now, King Bhishmaka, he also would be happy to marry Rukmini to Krishna. जो कि राजा भीष्मक थे, उनको बहुत आनंद था कि अगर रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ हो जाए। But his eldest son Rukmi, had already done the negotiations for marriage with Shishupal. पर उनके जो बड़े पुत्र थे रुक्मिणी, उन्होंने पहले से ही शिशुपाल के साथ सब कुछ बोल के रखा था। Sometimes when it's time for the daughter to get married, the eldest son is sent to do the negotiations. तो बहुत बार अगर पुत्री का विवाह होता है तो बड़े पुत्र को भेजा जाता है विवाह बोलने करने के लिए। So our Rukmi, he did the negotiations with Shishupal and he closed the deal. और रुक्मी ने शिशुपाल के साथ सब वार्तालाप करके सब कुछ पहले से ठीक करके रखा था। So actually King Bhishmaka would be happy to marry Rukmini to Krishna, but because Rukmi had closed the deal, he was like, okay, ठीक है, चलेंगे, let's go ahead. तो भीष्मक खुश रहते थे अगर रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ हो जाता, पर पहले ही अगर रुक्मिणी ने बोल के रखा था तो उन्होंने बोला ठीक है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। He wanted to support and encourage his eldest son. तो अपने बड़े पुत्र को प्रेरणा दे रहे थे। But Rukmini was not happy. पर रुक्मिणी संतुष्ट नहीं थी। Because she was in love with Krishna. क्योंकि वो कृष्ण के साथ प्रेम में थी। She was in love with Krishna. वो कृष्ण के प्रेम में थी। But how did she fall in love with Krishna? She never met Krishna. पर कृष्ण के प्रेम में कैसे हो गई? क्योंकि पहले कोई भी उन्होंने कृष्ण से देखा नहीं था। She fell in love with Krishna because she heard about Krishna. क्योंकि उन्होंने कृष्ण के बारे में सुना था, इसलिए कृष्ण से उनको प्रेम हो गया। She heard about his wonderful qualities. भगवान उनके दिव्य गुण उन्होंने सुने थे। She heard about his wonderful activities. उनके दिव्य कार्य उन्होंने सुने थे। And in this way, just by hearing, she became attracted to Krishna. और इस प्रकार केवल सुनने मात्र से उनकी तरफ आकर्षित हो चुकी थी। So we should also hope to attain the same love for Krishna by hearing about Krishna. तो हमको भी यही आशा होनी चाहिए कि हम लोग भी कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाएंगे केवल सुनने मात्र से। That's why it's so important to regularly hear Srimad Bhagavatam. और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमेशा सतत हमको भागवतम सुनना चाहिए। It's so important to regularly read Srila Prabhupada's books. और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ हमेशा पढ़ने चाहिए। But alas, पर दुर्दैव है कि we don't have attraction to hear Bhagavatam or read Srila Prabhupada's books. हमको श्री प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने के लिए आकर्षण नहीं है। So how can we get that attraction? तो कैसे हमको आकर्षण प्राप्त हो सकता है? One important factor is we need to cultivate humility. कौन सा महत्वपूर्ण अंग है जो हमको अपने लाना पड़ेगा? वो है नम्रता। Sometimes when we go out on the streets in India to do book distribution on the
stop lights, the traffic lights, and we give the Bhagavad Gita to say, oh, Krishna, I know Krishna, our Krishna, I know Krishna. और जब हम लोग ग्रंथ वितरण के लिए बाहर जाते हैं ट्रैफिक सिग्नल पे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कृष्ण कृष्ण तो हमको पता ही है. Yes, so humility is required. तो नम्रता बहुत जरूरी है. We have to realize actually we don't know Krishna. हमको पता होना चाहिए कि हम कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानते. So therefore this verse, the third verse of XXXX is such an incredibly critical, crucial verse to understand and imbibe. तो हमारे लिए शिक्षाशास्त्र का जो तीसरा वर्ष है बहुत 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 महत्वपूर्ण है, उसको समझना चाहिए. Chunadapi sunichena Turorapi sahishnuna Amaniya manatena Kirtaniya sadahari. And one should feel oneself lower than the straw in the street, more tolerant than the tree, be free from all sense of false prestige, be ready to give all respect to others and not expect any respect for ourselves. तो हमको तृण से भी हीन समझना चाहिए, वृक्ष जैसा सहिष्णुता होना चाहिए, खुद को कुछ मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, पर इतरों को दूसरों भक्तों को मान देना चाहिए, और इस तरह हम लोग हमेशा संकीर्तन कर सकते हैं. If one can get to this platform, we can begin to get an attraction towards Krishna Katha. अगर हम लोग इस स्तर पे आ जाते हैं तो कृष्ण कथा के प्रति हमारा रुचि बढ़ जाएगा. And also an attraction to the holy names. और उसी तरह हरि नाम के प्रति भी हमारा रुचि बढ़ जाएगा. Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे. and we should aspire for that mood of gopi bhava, this dasanudasaha, this mood of being servant of the servant of the servant of the servant. हमको ये जो भावनाएं हमेशा विकसित करनी चाहिए, जैसे गोपियों के जो दास है उनका सेवक हमको बनना है. Because through this humility and this mood of servant of the servant of the servant, we can cultivate the desire to serve Vaishnavas. ये जो नम्रता का गुण हम लोग जब विकसित करते हैं, दास अनुदास की भावना, तो हम लोगों की सेवा करने की इच्छा जागृत हो जाती है. And when we have a desire to serve the devotees, serve the Vaishnavas, then the Krishna Katha ruchi, the taste for Krishna Katha awakens. जब हम लोग ये इच्छा हमारे अंदर आ जाती है वैष्णव की सेवा करने की, तब जाके कृष्ण कथा सुनने की हमको रुचि आ जाती है. शुश्रूषोषदधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निसेवया. This beautiful shloka from Srimad Bhagavatam explains that when we engage in Syan Mahat Sevaya, in the Mahat Sevaya, the service of the great souls, we get Vasudeva Katha Ruchihi. We get attraction to Vasudeva Katha, Krishna Katha. एक जो भागवतम का बहुत सुंदर श्लोक है, ये हमको ये बता रहा है कि जब हम लोग वैष्णव की सेवा करते हैं तो वासुदेव कथा रुचि, मतलब वासुदेव की जो कथा है उनको सुनने में हमको रुचि प्राप्त होती है. Therefore, the opportunity to serve Vaishnavas is our greatest good fortune, our greatest treasure. तो इसीलिए वैष्णव का सेवा करने का जो अवसर है वो बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा है. And Srila Prabhupada has offered us all the opportunity for Vaishnava Seva by engaging in his mission. और श्रील प्रभुपाद ने हमको एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया है उनके भक्तों का सेवा करने के. The mission of spreading Krishna consciousness all over the world. ये जो है कृष्ण प्रचार करने का आंदोलन. Prithivite achayat nagaradi gra sarvatra prachar hoibe moranam. That Lord Chaitanya has said the chanting of my holy name will go to every town and every village all over the world. चैतन्य महाप्रभु बताते इस श्लोक की मेरा जो हरि नाम है वो हर ग्राम में हर गांव में वो जाने वाला है पूरे जगत में. And by engaging in this mission, we're serving the mission of Srila Prabhupada. और इस आंदोलन में संकीर्तन में भाग लेके हम लोग प्रभुपाद के आंदोलन में सेवा कर सकते हैं.
And we can get that Vasudeva Katha Ruchihi. We can get that taste. तब जाके हमको भगवान के कथा में रुचि आ जाएगी. Then we can hear about Krishna. हम लोग कृष्ण के बारे में सुनेंगे. And just like Rukmini Devi, we can develop that love for Krishna just by hearing about him. उसी जिस तरह रुक्मिणी ने भगवान के प्रति प्रेम विकसित किया, हमको भी वो प्रेम विकसित करने का अवसर है. So what is Rukmini to do? तो रुक्मिणी को करने को क्या था? She's going to be married to Shishupal. वो शिशुपाल से उनका विवाह होने वाला था. But she loves Krishna. पर वो कृष्ण से प्रेम करती थी. What to do? क्या करेंगे अभी? Romeo and Juliet. रोमियो और जूलियट की तरह. If it was Romeo and Juliet, Juliet would commit suicide. अगर रोमियो और जूलियट की कथा रहती तो यहाँ पे जूलियट आत्महत्या कर देती. Romeo also. रोमियो भी. Both of them, they committed suicide. दोनों भी आत्महत्या करते. Because they had a love that could not be consummated. A love that could not be had. Love that could not be achieved. हाँ, अगर वो प्रेम का परिपूर्णता प्राप्त नहीं करते. So Rukmini is faced with this dilemma. तो रुक्मिणी एक द्वंद्व में थी. Oh no! Oh no! Oh no, I have this love for Krishna and I cannot achieve Krishna. Shishupal is going to marry me. क्या करें मैं? मुझे कृष्ण से प्रेम नहीं है. शिशुपाल मेरे से विवाह करना चाहते हैं. What can I do? क्या कर सकती हूँ मैं? Then she had an idea. तब उनके दिमाग में जाके एक कल्पना आई. I will send a love letter to Krishna. मैं कृष्ण को एक प्रेम पत्र भेजती हूँ. I will pray to Krishna in this letter that I don't want to marry Shishupal. I want to marry you, Krishna. और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करना चाहती, केवल आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ. I know that a lion will not allow a jackal to take away his property. मुझे पता है कि जो सिंह है वो कभी सियार को अलाउ नहीं करेगा अपना भक्ष्य लेने के लिए. I know that you are dear to your devotees. मुझे पता है कि आप अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं. You are called Rama. आपका नाम राम है. Rama means one who gives pleasure to his devotees. इसका मतलब है कि जो अपने भक्तों को आनंद देते हैं. So please give pleasure to me. तो कृपया मुझे भी आनंद दीजिए. By kidnapping me. मेरा अपहरण करके. And preventing my marriage from Shishupal. और शिशुपाल के जो साथ मेरा विवाह हो रहा है उसको रोक के. Hey Krishna. हे कृष्णा, let me be married to you. मेरा विवाह केवल आपके साथ होना चाहिए. So she put all these sentiments in a letter. तो अपनी पूरी भावना उन्होंने अपने पत्र में लिखी थी. And this is the letter. और यही वो पत्र है. She rolled up the letter. उन्हें पत्र को सब फोल्ड किया. She gave the letter to a brahmana. एक ब्राह्मण को उन्होंने दिया. And she told the brahmana, please, you give this letter to Krishna. और उन्होंने ब्राह्मण को बताया कि कृपया जाके पत्र कृष्ण को दीजिए. So the brahmana traveled all the way from Kaudinyapur, from Vidarbha, all the way to Dwarka. तो ब्राह्मण पूरा विदर्भ कौंडिन्यपुर से लेके द्वारका तक उन्होंने प्रवास किया. Dual purpose. So then Krishna got the letter. और उसके बाद कृष्ण को पत्र मिल गया. And Krishna read the letter. कृष्ण ने पत्र को पढ़ा. He was so happy. बहुत आनंद उनको हुआ. And he spoke very sweet words. और बहुत अच्छे शब्दों में बोला उन्होंने. You can hear the sweet words. Krishna said, my mind is always absorbed in thoughts of the daughter of King Bhishmaka. कृष्ण ने बोला कि मेरा जो मन है हमेशा भीष्मक जी जो कन्या है उनमें मेरा मन हमेशा लगा रहता है. She is always thinking of me.
वो भी मेरे हमेशा स्मरण कर रही है, and I am always thinking of her. और मैं भी उनका हमेशा स्मरण कर रहा हूँ. And as I think of her and think of her and think of her, sometimes I can't even sleep at night. मैं बहुत बार ऐसा होता है कि मैं उनके बारे में सोचते सोचते मुझे रात में निद्रा भी नहीं आती. Has anyone had this experience? ऐसा किसी को अनुभव है? Krishna is having the experience. कृष्ण को यह अनुभव है. So Krishna tells the Brahmana that tell Rukmini not to worry. कृष्ण ने ब्राह्मण को बोला, रुक्मिणी को जाके बताओ कि चिंता मत करो. I will come and kidnap her. मैं जरूर आऊंगा और उनका अपहरण करूंगा. Shri Krishna Bhagavan ki jai. So meanwhile, the date of the wedding is set. उसी बीच में विवाह का जो तिथि था वो फिक्स हो गया. And Krishna understands that the wedding is about to happen. कृष्ण को समझ में आया कि अभी विवाह होने ही वाला है. Krishna calls his chariot driver. कृष्ण ने अपने सारथी को बुलाया. Daruka, दारुका, bring my chariot. मेरा रथ लेके आओ. Bring my horses. मेरे घोड़े लेके आओ. And Daruka brings the chariots. और दारुक वहां पे रथ लेके आ गए. 4 very special horses. बहुत विशेष घोड़े थे, 4 उनका संख्या. Different colors. अलग कलर रंग उनका था. Very fast horses. बहुत तेज से दौड़ने वाले थे. And then Krishna leaves from Dwarka. और कृष्ण ने द्वारका से प्रयाण किया. Travels to Kaundinyapur. और कौंडिन्य तरफ आ गए. It's called Kaundina in the Bhagavatam, but modern day Kaundina is Kaundinyapur in Vidarbha. There's a place. भागवतम में उसको कौंडिन्य बोला जाता है, पर आज आधुनिक जगत में अभी उनको कौंडिन्यपुर बोला जा रहा है. Has anyone been there? कोई वहां पे गया है? Yes. Okay, good. Very, very good. We have an ISKCON center in Kaundinyapur. हमारा वहाँ पे एक इस्कॉन केंद्र है कौंडिन्यपुर में. And that Amba Devi Mandir, where this story is about to unfold, that mandir is still there. और जो अभी जो कथा होने वाली है अम्बा, वहाँ पे एक मंदिर है अम्बा देवी का, वहीं पे ये लीला हो चुकी है. So please visit that place sometime. तो कृपया सब लोग वहाँ पे दर्शन के लिए Very जाइए. special place. और प्रार्थना कीजिए. So Krishna, he travels all night, maybe 12 hours. तो कृष्ण पूरी रात में शायद 12 घंटा उन्होंने प्रवास किया. It's more than 1,000 miles. हजारों माइल से भी ज्यादा था. Now, Pranav Prabhu and I traveled from Rajkot to Pune by car, and it took weeks. तो प्रणव प्रभु में जो है राजकोट से पुणे में आ गए, उसको हफ्ते लगा. It took a long time. बहुत समय लगा. And it was not easy. वो आसान भी नहीं था. But Krishna in 12 hours by horse. पर कृष्ण केवल घोड़े के द्वारा 12 घंटों में आके पहुंच गए. Fast horses. बहुत तेज से दौड़ने वाले घोड़े. They sped all night long and reached to Kaundinyapur. बहुत तेज से भाग के वो कौंडिन्यपुर में आके पहुंच गए. So now, at that time, Balaram, he heard about what was going on. तो उसी समय बलराम जी ने सुना कि क्या हो रहा है. That Rukmini is about to get married the next day. तो अगले दिन रुक्मिणी का विवाह होने वाला है. And Krishna had left with the chariot, and the Brahmana was coming with Krishna. तो कृष्ण ने द्वारका को छोड़ा, ब्राह्मण भी उनके साथ है. So it was Krishna, the Brahmana, his charioteer, and 4 horses against all the princes that were assembled in Kaundinyapur. तो कृष्ण ब्राह्मण, उनका सारथी और केवल 4 घोड़े थे जिनको सामना करना था, जितने भी राजे वहां पे आए थे कौंडिन्यपुर में. So Balaram, he assembled big army from Dwarka. तो बलराम जी ने पूरा अपना सेना को लेके वहां पे प्रस्थान किया. And began traveling to Kaundinyapur. कौंडिन्यपुर की तरफ वो प्रस्थान किया उन्होंने. So King Bhishmaka, he was not that enthusiastic. भीष्मक उतना ज्यादा उत्साही नहीं थे. But still, he promised his daughter, so okay, let's go ahead with it. And he started decorating the city. तो फिर भी उन्होंने अपने पुत्री को बोला था
तो पूरा शहर उन्होंने सजाया। Sprinkled water on all the roads with scented water, acha fragrance. पूरे कौंडिन्यपुर के रास्ते पे उन्होंने सुगंधित जल वहाँ पे छिड़काया था। And they had nice decorations, flowers, फूलों से सजाया था। and pots, something like our gudi padua, but this way ulta. अलग अलग वहाँ पे बर्तन रखे हुए थे, जैसे गुड़ी पड़वा यहाँ पे हमने किया उसी तरह। They lit agarbatis, there was smoke coming. तो अगरबत्ती उन्होंने जलाया था, उससे धुआं आ रहा था। He fed the priests, he fed the brahmanas. ब्राह्मण और पुजारी को उन्होंने प्रसाद दिया। And Rukmini was looking so beautiful. रुक्मिणी बहुत सुंदर दिख रही थी। She was so clean. बहुत स्वच्छ थी। She had beautiful teeth. बहुत सुंदर दंत पंक्ति उनके She had an auspicious thread wrapped around her wrist. उनके कलाई में बहुत अच्छा एक पवित्र धागा बंधा हुआ She था। had nice alankar, nice jewelries. बहुत सुंदर अलंकार उनके शरीर पे थे। Beautiful silk upper and lower cloths. वहाँ सिल्क की साड़ी उनके पास थी। Yeah, she was looking gorgeous, so beautiful. बहुत सुंदर वो दिख रही थी। And the priests were chanting mantras from the Yajur, Atharva, Vedas, the Yajur Veda. पुजारी लोग वहाँ पे मंत्र जाप कर रहे थे, अथर्ववेद से, यजुर्वेद से। They were doing yajnas. यज्ञ भी हो रहा था। Svaha, Svaha, Svaha. They were chanting all kinds of mantras. इस प्रकार के मंत्र जाप वो कर रहे थे। And there was Shishupal's father had come. शिशुपाल के पिता भी वहीं पे थे। His name was Damaghosh. उनका नाम था दमघोष। So Damaghosh, he brought big military divisions with him. दमघोष अपने साथ बहुत बड़ा सेना लेके आए थे। There were elephants with golden armor. हाथी वहाँ पे थे जिनके ऊपर सोना चढ़ा हुआ था। And elephants are dangerous. हाथी बहुत खतरनाक होते हैं। Actually, I don't know if you heard, but just a few days ago, one of the elephants in Mayapur went crazy and killed one of the persons in charge of the elephants. तो अभी कुछ दिन पहले मायापुर में घटना हुआ जहाँ पे हाथी पूरा पागल हो गया और एक हाथी का जो इंचार्ज था उसको उसने हत्या कर दी। So these are like mandir elephants. ये तो मंदिर का हाथी है। Imagine war elephants. तो कल्पना कीजिए युद्ध का हाथी क्या रहा है। You know, attack like that. Sadhu, Saudan, bahut khatarnak, dangerous. बहुत भयानक और कठिन। And then, so it didn't look like a marriage was going to happen. It looked like there was going to be big war going to happen. ऐसा लग रहा था कि विवाह नहीं पर बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। So then Bhishmaka, he comes out, receives Damaghosh. भीष्मक बाहर आए, उन्होंने दमघोष को देखा। Some other kings had come. बाकी बहुत सारे राजा वहाँ पे आ चुके थे। Jarasandha, जरासंध, Dantavakra, दंतवक्र, Vidurata, Pundraka, पौंड्रका, all these powerful kings had come. सब शक्तिशाली राजा वहाँ पे आए थे। Looking like there was going to be a big fight. ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। Actually, it was an open secret ये खुला हुआ रहस्य था that Krishna was supposed to marry Rukmini. कृष्ण का विवाह रुक्मिणी साथ होने वाला है। And then Rukmini promised Rukmini to Shishupal. पर रुक्मिणी ने पहले ही शिशुपाल को बोल के रखा था कि रुक्मिणी का विवाह आपके साथ होगा। And there was even a rumor going around. तो एक अफवाह भी ऐसी हो चुकी थी। Some people were saying that Rukmini had sent a letter with a brahmana to Krishna. कुछ लोगों ने बोल के रखा था कि रुक्मिणी ने एक प्रेम पत्र भेजा है कृष्ण के लिए ब्राह्मण के द्वारा। It was just a rumor. एक अफवाह थी। But maybe it was true. और ये सत्य भी हो सकता है। So everyone's getting ready for a big fight. तो सब लोग तैयार थे युद्ध के लिए। Yeah. So the brahmana, he got nearby to Kaudinyapur. तो ब्राह्मण जैसे कौंडिन्यपुर के पास आए। And Rukmini was in the palace. रुक्मिणी अपने महल में थी। The next day is her wedding. अगले ही दिन विवाह होने वाला था। It's the night. बस रात बाकी है। No word from Krishna.
कृष्ण के बारे में कुछ पता नहीं, No word from the Brahmana. ब्राह्मण के बारे में कुछ पता नहीं। Rukmini is in anxiety. रुक्मिणी चिंता में थी, What's going to happen? क्या होने वाला है। She was thinking, वो सोच रही थी, there is only one night between today and my marriage day. तो केवल एक ही रात बाकी है मेरे और मेरे विवाह के बीच में। Still, neither Krishna nor the Brahmana has returned. फिर भी अभी तक कृष्ण और ब्राह्मण भी आए नहीं। I cannot understand any reason for this. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या कारण है इसके लिए। Maybe Krishna has rejected me. शायद कृष्ण ने मुझे मेरा स्वीकार नहीं किया। Maybe the Brahmana is disappointed. शायद ब्राह्मण भी नाराज है। But still she was expecting, maybe any moment they may come. फिर भी उनको अपेक्षा थी कि शायद कुछ भी कृष्ण या ब्राह्मण आ सकते हैं किसी। She was thinking maybe the demigods are displeased. शायद वो सोच रही थी कि शायद देवता मुझसे नाराज है। She began offering prayers to the devatas. तो देवता को प्रार्थना करने लगी For Krishna. कृष्ण के लिए। So it's similar when the gopis were practicing Katyayani Vrata. जिस तरह गोपियां जो थी कात्यायनी व्रत का पालन करती, They were praying to goddess Katyayani, please help us marry Krishna. कात्यायनी देवी से वो प्रार्थना करते थे कि हमारा विवाह कृष्ण के साथ हो जाए। So even Rukmini is appealing to Durga Devi, please let me marry Krishna. इसी तरह रुक्मिणी भी दुर्गा देवी को प्रार्थना करे थे कि मेरा विवाह कृष्ण के साथ हो जाए। Tears were coming from her eyes. उनकी आंखों से आंसू आ रहा था। She was hoping against hope. वो आशा कर रही थी। Then all of a sudden some trembling occurred. तो उसी क्षण उनके शरीर में रोमांच होने लगा। As we hear in today's verse, जैसे हमने पढ़ा आज, that she felt a twitch in her left thigh, her arm, and her eye. तो उनको जो बाई जांघा थी, बाया हाथ और आंख में वो कंपन होने लगा। Yeah, that her bujo, her uru, her thigh, her uru was trembling. उनका बाई जांघ, बाहा We have और an uru आंख। here, right? Yeah. Uru, vama, uru, bujo, netram. Vama, uru, bujam, नेत्र। netram. So her thigh, her bujur, her arm, and her netram, her eye, started trembling. तो उनकी बाई जांघ, बाई भुजा तथा बाई आंख फड़कने लगी। And this is considered auspicious. और इसको पवित्र माना जाता है। And just at that moment, उसी क्षण Atha Krishna Vinirdishta. Then as Krishna ordered Saha, that Dvija, that learned Brahman, who was Sattamaha, the most pure, he appeared. तो उसी क्षण जैसे कृष्ण के आदेश अनुसार जो शुद्ध और विद्वान ब्राह्मण वहां पे प्रकट हो गए। The Brahmana appeared. ब्राह्मण वहां पे आ गए। Haribo! हरिबोल। So then Rukmini could understand by his symptoms, he was very happy and smiling. तो रुक्मिणी जो अपने लक्षणों के द्वारा समझ गई कि बहुत आनंद का क्षण उनके चेहरे पे स्मित हास्य आ गया। She could understand Krishna is here. तो समझ गई कि कृष्ण यहाँ पे आ गए हैं। Krishna aa raha hai. कृष्ण आ रहे हैं। Aa raha hai. Something like that. Sorry. So she was, Rukmini bahut prasann hai. She was very happy. रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हो गई। She wanted to give some charity to the Brahman. और ब्राह्मण को कुछ दान देना चाहती थी। But she had nothing to give. पर उनके पास कुछ नहीं था देने के लिए। Only thing she had, she just offered her obeisances. एक ही था, उन्होंने उनको प्रणाम किया। She couldn't do any more than that. उसके अलावा उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं। So Krishna, he fulfills the desires of his devotees. कृष्ण जो है अपने भक्तों का इच्छा जरूर पूर्ण करते हैं। Especially the spiritual desires, the desires to come closer to Krishna. और विशेषता जो आध्यात्मिक इच्छा है जिससे हम लोग कृष्ण के पास आ सकते हैं। If we take one step towards Krishna, Krishna will take 1,000 steps towards us.
हम लोग कृष्ण की तरफ एक चरण आगे बढ़ते तो कृष्ण हजारों स्टेप्स हमारे पास आ जाते हैं। And if we surrender everything to Krishna, Krishna will give everything to और हम us. लोग पूरी तरह शरणागत हो जाते तो कृष्ण सब कुछ देते हैं हमको। Sarva dharman parityajya सर्वधर्म परित्याज्य mamekam sharanam vraja मामेकं शरणं व्रज aham tvam sarva papebhyo अहं त्वं सर्वपापेभ्यो mokshayishami ma suchaha. मोक्षयिष्यामि मा शुचः। Lord Krishna says, Sarva dharman parityajya. Give up all religious principles, all dharmas, and just surrender unto me. कृष्ण इस श्लोक में बोलते कि सब धर्म का त्याग करो और केवल मेरे शरण में आ जाओ। I will protect you from all sinful reactions. सारे पाप कर्म की जो प्रतिक्रिया है उससे मैं आपका रक्षा करूंगा। Do not fear. और डरो मत। We just need to be patient. बस धैर्य रखो। Stay in the process of bhakti. भक्ति के प्रोसेस में रहो। Now we see so many alm trees with almonds hanging down. हम लोग देख रहे कि बहुत सारे आम के वृक्ष है जिसको अभी आम लगे हुए हैं। So many alm is green color. कुछ आम जो है हरे कलर के हैं। Is kacha alm. उसको कच्चा आम बोला जाता है। But if these alm, they just stay on the tree, they get the sun, they get the rain, the kacha alm will become pakka alm. यही आम जो अगर वृक्ष को लगा रहेगा तो सूरज का रोशनी मिलेगा, हवा मिलेगा और एक कच्चा आम पक्का आम बन जाएगा। So our love for Krishna is like that. उसी तरह हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम होता है। It's like a kacha alm. वो कच्चा आम की तरह है। It's a green heart. हरा हृदय है। But gradually, if we just stay in the process of bhakti, practicing Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam, gradually the heart will warm up and become more sweet and orange color, red color. और धीरे धीरे जैसे हम लोग भक्ति की जो नवविधा प्रक्रिया है, जैसे जो श्रवणम कीर्तन से चालू हो जाती है, उसका पालन करते रहेंगे तो जो हमारा हरा हृदय जो है पक जाएगा और वो सैफरन कलर का हो जाएगा। Hearing the pastimes of Lord Krishna is so important because it endears us to Him. It allows us to come closer and closer to Krishna. ये कृष्ण का जो यहाँ पे जो लीला है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके कारण हम कृष्ण के पास और आ सकते हैं। And for cultivating that attraction to Krishna Katha, the service to the Vaishnavas is just essential. और ये कृष्ण का था कि कृष्ण कथा में रुचि आने के लिए वैष्णव का सेवा करना बहुत जरूरी है। So it's so important to engage in the mission of Krishna consciousness. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको जो कृष्ण भावनामृत का जो आंदोलन है उसमें हमको भाग लेना चाहिए। Because it gives us the opportunity for seva. क्योंकि सेवा का अवसर हमको प्रदान करती है। Seva will save ya. Seva will save ya. Sorry, it's a सेवा will save you. हाँ, सेवा आपको रक्षा करेगा। Seva will save ya. So let us, on this most auspicious day of Gaudi Padwa, let us remember these beautiful pastimes of Lord Krishna. इस पवित्र अवसर पे हम लोग भगवान की जो दिव्य लीला है उसका स्मरण करेंगे। Rescuing Rukmini. रुक्मिणी का जो अपहरण हो रहा है वो। And pray the same way Krishna should come and kidnap us, take us away from Maya and become our proper husband. तो उसी तरह हम लोग प्रार्थना करेंगे कि कृष्ण भी आए और हमारा अपहरण करे माया के चंगुल में से। Our master. हमारे पति हैं। Our prananath. हमारे प्राणनाथ है। Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Krishna. हरे कृष्ण।
Thank you very much. Thank you. I want to know if there are any comments or questions before we conclude. Yes, Prabhu. कुछ प्रश्न है? Mike. Prabhu, and we'll come back to you. We can go and continue. Thanks for the nice class, Maharaj. My question is not directly related to the class you just gave. If you have permission, I can ask. Not related to the class, is that what you're saying? It's not directly, kind of. Kind of. Okay, let's try. You can choose not to answer. It's good to have a choice. So you mentioned in the class that Prabhupada has given us all the facilities when he institutionalized ISKCON. And he's given us everything we need to progress in Krishna consciousness. My question is, for this whole science about Vastu. Vastu. So, as far as I can recall, Prabhupada has given all that we need, but I can see that this is a growing trend among devotees. A lot of people spend, I may be wrong on this, but a bit more than proportional amount of time and energy in perfecting their houses for Vastu. So I wanted to take your advice, Maharaj, to what extent devotees need to get involved in this whole Vastu thing. I mean, we've never heard or seen Prabhupada giving extensive instructions to devotees perfecting their houses for Vastu. At the same time, it's a Shastra, it's a scripture. So it would be nice if you can give us some indication as to how much should we get involved and do we really need to. Yeah, thank you for your question. If I understand your question properly, your question is that Srila Prabhupada has given us all facilities in ISKCON in order to progress in our spiritual life. And you have a concern, you're expressing a concern that people are giving an inordinate amount of attention to Vastu Shastra, especially in application to their homes. And again, expressing the concern, Prabhupada never gave a lot of emphasis on this, yet it's a scripture, so it has validity. So how can we understand what is the proper balance in utilization of Vastu Shastra in Krishna's service? Would that be appropriate? Is that correct? Yes. Thank you so much. Can you kindly translate? प्रश्न प्रभु जी का ऐसा है कि प्रभुपाद ने हमको सब सुख सुविधा दिया, मंदिर वगैरह सब कुछ दिया, फिर भी कुछ लोग हैं जो वास्तुशास्त्र में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और विशेषता उनको अपना जब घर बनाना है तो उसमें ज़्यादा वास्तुशास्त्र के बारे में सोचते हैं। पर प्रभुपाद ने ऐसा कभी किसी अपने शास्त्र में कहीं कथा में भी उसका उल्लेख भी नहीं किया है। तो एक कैसा समझना है, एक तरफ शास्त्र भी है और प्रभुपाद ने हमको भी दिया नहीं, तो उसको कैसे बैलेंस करना चाहिए? ठीक है? So there's interesting verse, very important series of verses in the 12th chapter of Bhagavad Gita, text 13 through 20. भगवद गीता के 12वें अध्याय में 13 से लेकर 20 तक एक श्लोक की संख्या है, बहुत विशेष है. And especially I'm referring to the verse number 16. 60 नंबर के श्लोक जो है, chapter 12, text number 16. हाँ, अध्याय क्रमांक 12, श्लोक संख्या 16. Anapeksha Shuchir Daksha Udasino Gatavyata Sarvaramba Parityagi Yo Mad Bhakta Same Priyaha. My devotee who is not dependent on the ordinary course of activities, who is pure, expert, without cares, free from all pains, and not striving for some result, is very dear to me. We have Bhagavad Gita in Hindi for Prabhu. Yeah. Please hand it over.
chapter 12, text number 16. So this particular verse, Shri Krishna Bhagavan, he says that his devotee is not striving for some result. तो इस श्लोक में विशेषता बोला गया कि मेरे जो भक्त है Okay, फल so के प्रति ज्यादा आसक्त। we'll read the entire translation of the verse. मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। Okay, if you go halfway in the purport, it says, the pure devotee does not endeavor for anything which is against the principles of devotional service. Can you find that halfway down? शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। For example, उदाहरणार्थ, constructing a big building requires great energy. किसी विशाल भवन बनाने में काफी शक्ति लगती है। And a devotee does not take to such benefit अतः वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता if it does not benefit him by advancing his devotional service. जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। He may construct a temple for the Lord, वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण कर सकता है, but for that he may take all kinds of anxiety. और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, But he does not construct a big house for his personal relations. लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा ऐसा मकान कभी नहीं बनाता। So the principle is atyahara prayayascha prajalpa niyamagraha. We should not over endeavor for mundane things. तो सिद्धांत है कि अत्याहार प्रयास प्रज्वल्प निग्रह नियमाग्रह, हमको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए कुछ चीजों के लिए। Is Vastu Shastra authentic? अगर वास्तु शास्त्र प्रमाणित है, Yes. हाँ, Can it be used in Krishna's service? तो कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, Yes. हाँ, But should we overly involve in it? और बहुत ज्यादा उसमें कार्यरत होना No. नहीं। It takes some intelligence to understand what is the appropriate use according to time, place, and circumstance. तो उसके लिए थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगी कि काल, समय और परिस्थिति के अनुसार उसको। If I'm building a beautiful temple for the Lord, अगर हम लोग भगवान के लिए बहुत सुंदर मंदिर बना रहे हैं, then I may like to go through all pains to make sure the vastu is pakka. तो मैं सब प्रकार के कष्ट ले लूंगा कि वास्तु सही होना चाहिए। If I have constructed a big house for my relations, और मैं अपने परिवार वालों के लिए बड़ा घर बनाऊंगा, then and Prabhupada is saying here in this purport, it's not appropriate to construct a big house. प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे कि इसका जरूरत नहीं है। So if it's not appropriate to construct a big house, it's not appropriate to take a lot of elaborate anxiety about the vastu of such a house. तो अगर प्रभुपाद बोल रहे कि बहुत बड़ा घर बनाने की जरूरत नहीं, तो उसी तरह बहुत बड़ा चिंता करने की भी जरूरत नहीं वास्तु शांति के बारे में। So my humble suggestion, मेरा आपको नम्र निवेदन है, based on these teachings of Srila Prabhupada that we just discussed, तो अभी हमने जो पढ़ा प्रभुपाद के ग्रंथों में उसके आधार पर home should be modest, होम एक आधुनिक होना चाहिए घर, and the time and energy invested in them should be modest. तो उनमें उसमें उसके लिए जो समय जो हम लोग व्यतीत कर रहे हैं वो भी प्रमाणित होना चाहिए। Are we getting the translation right? Yeah, thank you. And at the same time, our investment of time and energy into vastu should also be modest. उसी तरह वास्तु के लिए हम लोग जो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं वो भी सही होना चाहिए। Does that like address your concern? ये सही है आपका प्रश्न उत्तर। माइक। It does matter. I think more precisely, I was referring to the situation where the devotees were practicing and they are very concerned about the effects of vastu. So, I mean, personally, I've known very nice, sincere devotees
very dedicated devotees, but at the same time, they're very concerned that if something is not right as far what's in my house, that it may attract problems in my life. And we always thought that practicing Krishna consciousness should protect you. And then they get into this whole discussion that if you're not a pure devotee, then how can you just rely on pure Krishna? You need to take care of this and that. But then suddenly, Maharaj, it just opens the whole Pandora box, because then you have astrology, then you have all these different various things that people can always do. And then I just feel that this puts the whole Krishna consciousness on a secondary level, and then people get to. So the devotees really need to worry so much about the vasta not being affected. Wouldn't Krishna help them even if they are not, pure devotees? So I think we're discussing two different things: the pure devotee issue and the vastu and astrology issue. It's just mainly to the vastu. I mean, the devotees need to worry so much about, say, the vastu is not perfect 100%. They need to worry about getting it right at the cost of so much energy and money invested. Do devotees need to spend so much time and energy and money wastage to make sure it's right? Is that your question? Yeah. Can you translate, please? प्रभु जी का कंसर्न है कि सही में भक्तों को उतना ज्यादा जरूरत है कि वास्तु के बारे में सोचने के लिए, इतना ज्यादा चिंता करने के लिए अपना पूरा समय या अपना पूरा शक्ति उसमें लगा दे? No. नहीं. Thank you. Prabhu? हाँ, अगला प्रश्न. Thank you so much, Maharaj, for giving this wonderful class. So as you know, Maharaj, that Harinam Sankirtan is very important. But there are two things, doing Kirtan in temple and doing Kirtan outside. So which is the most important and prominent thing to do? Which is the most important, doing Sankirtan in temple or doing outside? Okay, thank you for your question. Your question, if I understand you properly, is which is most important, Kirtan in the temple or Kirtan outside? प्रभु जी का प्रश्न है कि कौन सा चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मंदिर कक्ष में भगवान के सामने कीर्तन करना या बाहर जो हम लोग संकीर्तन करते हैं रोड के ऊपर, दोनों में से कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? They're both important. दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण है. If we don't do kirtan in the temple, there may not be kirtan outside the temple. अगर हम लोग मंदिर के अंदर कीर्तन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि बाहर भी नहीं होगा. One time devotees asked Srila Prabhupada. एक बार प्रभुपाद को शिष्य ने पूछा, Srila Prabhupada, you told all your Western disciples they should travel to India every year. प्रभुपाद आपने बोला था अपने शिष्यों को कि जितने भी आपके शिष्य हैं हर साल भारत में आना चाहिए. For flight tickets, every devotee will be at least $1,000. और एक भक्त के लिए जो विमान का जो टिकट रहता है कम से कम $1,000 रहता है. Hundreds of devotees will be traveling. और सौ से भी ज्यादा भक्त आएंगे. Thousands of devotees may travel. तो 1000 भी आ सकते हैं. Srila Prabhupada, if we just tell everyone to stay home, with that much money we can build huge temples. पर वही अगर भक्तों को हम लोग बोले कि आप अपने घर पे रहो तो उससे जो लक्ष्मी बचेगा हम लोग बहुत बड़े-बड़े मंदिर बना सकते हैं. Srila Prabhupada said, yes, you're right. प्रभुपाद बोले हाँ आप सही है. And another thing, और दूसरी और एक चीज है, that every day, every week, every month, every year, we spend so much money feeding bhoga and prasadam to the devotees. तो हम लोग हर दिन, हर हफ्ता, हर महीने इतना हम लोग मेहनत करते हैं, हमारा एनर्जी समय देते हैं भक्तों को प्रसाद देने के. If we just stop going to the market and cooking, we save so much money. तो हम लोग अगर हम लोग मार्केट में जाएंगे नहीं, प्रसाद बनाएंगे नहीं, तो बहुत ज्यादा लक्ष्मी बचा सकते हैं. We could build so many temples. बहुत बड़े मंदिर हम लोग बना सकते हैं. But we have to go to the market and buy bhoga, offer to Krishna, and feed the devotees so they're healthy. हमको मार्केट में जाना पड़ेगा, भगवान को भोग बनाना पड़ेगा और भक्तों को भी खिलाना पड़ेगा. Otherwise, they may die. तो उसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते. If you don't feed someone, they may die. अगर आपने किसी को खिलाया नहीं तो जीवित नहीं रहेंगे. The same way, when we do
kirtan in the temple, उसी तरह हम लोग अगर मंदिर में कीर्तन करेंगे it's very spiritually nourishing. तो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत प्रेरणा वहाँ पे मिलती We है, get inspiration, प्रेरणा हमको मिलती we get enthusiasm, है, उत्साह मिलता है, we get empowerment, हमको शक्ति प्रदत्तता मिलती we है, get the blessings of the deities, हमको अर्चाविग्रह के आशीर्वाद मिलते we हैं, get the blessings of the devotees. वैष्णव की कृपा भी हमको मिलती And है। with all those blessings and empowerment, then we can go out and do Harinam Sankirtan. हरि बोल। और उसी सब कृपा से आशीर्वाद से हम लोग बाहर जाके संकीर्तन कर सकते हैं, So both are important. तो दोनों भी जरूरी है। The temple kirtans, मंदिर वाला कीर्तन which Prabhupada also incorporated and instituted, जो प्रभुपाद ने चालू किया है, and the mandir and the nagar और sankirtans, उसी तरह नगर संकीर्तन भी, which Prabhupada also encouraged very much. उसको भी प्रभुपाद ने ही बोला है। So it's not this or that, it's both this and that together. तो ये अलग है वो अलग है, ऐसा नहीं कि दोनों ही साथ में हमको करना है। Mandir kirtans and nagar sankirtans, मंदिर कीर्तन और नगर संकीर्तन dono important hai. दोनों महत्वपूर्ण है। Okay, last question. Yes, Prabhu. Thank Mike- you, Prabhu. Mike is coming. Mike is coming to you. Maharaj, thank you very much for your presence. The question I have is, Prabhupada ji, and due to mercy of all the devotees, we have got so much nice association and so much facilities for doing our seva. But how can we return the favor to Prabhupada ji and the devotees? Like, how can we be grateful to them? Okay, thank you so much for your question, Prabhu. If I understand your question properly, you're saying that we've received so much from Srila Prabhupada and the devotees. How can we repay that debt to them? Is that correct? Yes? तो प्रभु जी का प्रश्न है कि प्रभुपाद और वैष्णव की कृपा से बहुत सारी चीजें हमको मिली, तो हम लोग अपना कैसा व्यवहार रख सकते हैं कि हमको उनको रिटर्न में या हम लोग कृतज्ञता भावना में रहें। So Srila Prabhupada and the devotees have saved us तो प्रभुपाद और वैष्णव ने हमारी रक्षा की from hellish existence. नरक यातना से, So how can we repay that debt? कैसे उनको हम लोग परत फेर कर So सकते हैं। Srila Prabhupada was asked this by one of his disciples. तो प्रभुपाद शिष्यों ने प्रभुपाद जी को पूछा, Srila Prabhupada said, you can never repay the debt to the spiritual master, तो प्रभुपाद बोले कि आप कभी भी आपका ऋण मुझे चुकता नहीं कर सकते, but you should try. आप प्रयत्न कर सकते हैं, By doing what I have done, जो मैंने किया वही आप कर सकते हैं। I have taken on austerities in order to spread Krishna consciousness. मैं बहुत तपस्वी का जीवन जिया कृष्ण भावना का प्रचार करने के So लिए। whatever you have received from me, तो उसी तरह आपको जो मेरे से मिला है you share that with others. तो आप दूसरे लोगों के साथ उसको वितरण करो। In this way, we can always try to repay to the debt to the spiritual master. और इसी तरह हम लोग प्रभुपाद का ऋण चुका सकते हैं, But it's never possible. तो कभी भी हो नहीं सकता। Na pareham. It's never possible to fully repay the debt to the spiritual master. कभी भी हो नहीं सकता कि हम लोग प्रभुपाद का ऋण पूरी तरह से चुका सकते, But we should try और हमको प्रयत्न करना चाहिए। in the mood of gratitude, ये कृतज्ञता की भावना है, following the instructions of the spiritual master अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करके and serving in his mission और उनके आंदोलन में सेवा करके, in a mood of cooperation. इन सहकार्य की भावना में। Srila Prabhupada said, Srila Prabhupada ne kaha, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, your love for me will be shown by how you cooperate together to keep this movement together after I am gone. तो प्रभुपाद ने हमको कहा कि अगर आप मुझे अपना प्रेम जताना चाहते हैं तो आप उस तरह कर सकते कि आप सहकार्य की भावना में रहो और एक मिशन आंदोलन को आगे बढ़ाओ। So let us cooperate. We have our temple president and we have wonderful senior devotees here in the mandir. तो सबको साथ सहकार्य की भावना रखी, हमारे मंदिर के अध्यक्ष हैं, बाकी भी वैष्णव हैं। We should endeavor to serve them, serve the senior devotees, हम लोग उनकी सेवा कर सकते हैं, वरिष्ठ वैष्णव की भी सेवा कर सकते हैं, assist them in their services to their spiritual masters. उनकी वो जो सेवा करे अपने गुरु के आंदोलन में, उनको हम लोग मदद कर सकते हैं। In the mood of servant of the servant of the servant of the दास servant. दास दास अनुवाद दास भावना में।
And in light of this, I would like to encourage everyone to participate this evening on the occasion of Gudi Padwa, the Harinam Sankirtan Yagna. इसी तरह मैं आप चाहता हूँ कि आप आज गुड़ी पाड़वा के पर्व के ऊपर जो संकीर्तन होने वाला है शाम को, आप उसमें सब लोग भाग लीजिए। From 5:30 p.m. to 8 p.m. 5:30 से लेके 8 बजे का समय। Where do we meet? ISKCON Kirtan Ministry Office. हमको कहाँ प्राधिकरण में जो ISKCON कीर्तन मिनिस्टर का जो ऑफिस है वहाँ पे हम सबको आना है। We'll send WhatsApp messages and Shri Instagram Prabhu messages. You'll get some message with the mercy of Krishna. आप सबको मैसेज मिलेगा WhatsApp द्वारा और Instagram के द्वारा। So please join us. तो आप सब लोग हमें I'm here to tell you more about it. It's His Grace Stoko Krishna Gopa Prabhu. So मुझे एक minute, I'll just close the class. Thank you all for your kind attention and participation this morning. May aap sab bod abari hoon. May aap sab bod kritagna. May kritagna hoon. Or fir malenge Krishna ki kripa. Harinam Sankirtan ke liye. This is Gudi Padwa Mahotsav. Granthara Srimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Gaur Premanande. Thank you very much. Bahod Bahod Dhanyavad. Hare Krishna. So Hare Krishna, महाराज अबू धाबी में थे और तभी हमने मैसेज किया महाराज को कि वैसे तो हम बहुत बार बुलाए महाराज को कि महाराज आइए, ऑफिस का इनॉग्रेशन है, ऐसा है वैसा है, बट फिर मैंने तरकीब निकाली कि महाराज सबसे प्रिय चीज है नगर संकीर्तन। तो गुड़ी पाड़वा के दिन हमने सोचा कि क्या महाराज जी महानगर संकीर्तन के लिए आएंगे। तो हमने पूछा महाराज जी से, अबू धाबी थे महाराज, कि महाराज हम नगर संकीर्तन का आयोजन कर रहे हैं, महानगर संकीर्तन का, और 200 से 300 डिवोटीज आएंगे, बहुत बड़ा नगर संकीर्तन होगा, तो क्या आप आएंगे? तो महाराज 1 सेकंड का भी विलंब ना करते हुए तुरंत बोले हाँ मैं आऊंगा। तो हम सबको मालूम है कि महाराज श्री को बहुत बहुत संकीर्तन से, स्पेशली जो नगर संकीर्तन होता है उससे बहुत बहुत प्यार है। तो हम सबसे अनुरोध करते हैं कि सभी लोग आज प्रचुर मात्रा में प्राधिकरण में बेल चौक के पास ISKCON कीर्तन मिनिस्ट्री ऑफिस है, आप गूगल में डाल सकते हो ISKCON कीर्तन मिनिस्ट्री ऑफिस, आप वहां पे 4 बजे तक आ सकते हो। 4 साढ़े 4 बजे महाराज जी वहां आएंगे। वहां पे छोटा सा एक प्रोग्राम होगा ऑफिस में, जहाँ पे महाराज ऑफिस पहली बार आएंगे, देखेंगे, और फिर 5 सवा 5 तक हम वहां से महानगर संकीर्तन करने निकलेंगे। तो कृपया सब डिवोटीज से अनुरोध है कि आप सभी लोग 4 साढ़े 4 तक ISKCON कीर्तन मिनिस्ट्री ऑफिस प्राधिकरण में जरूर आइए। श्री कृष्ण स्वामी महाराज की, हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौड़ प्रेमानंदे। Who you are you?